Myself, Dr. Shikha Maheshwari, working in ABES Engineering College as an assistant professor. So, the topic of my today's presentation is change of order of integration. These are the outlines of my presentation. First, we will discuss what is change of order of integration, why it is required, and its working rule. After that, we will discuss some problems with their solutions. So before starting the change of order of integration, we first need to understand why it is required. So in this question, the function is exponential y square and its order is dy dx. So we first want to know which is the limit of x and which one is the limit of y. So for this, we write one equation, x minus y equals to 1. So the value of y, the value of x can be written in terms of y, and if you are writing the value of y, this will comes in terms of x. Same way, we can same approach we used here. जब भी आप इंटीग्रेशन की लिमिट में x की वैल्यू देखेंगे तो वो जो लिमिट होगी वो किसकी होगी, y की. ओके और अगर यहाँ पे y की लिमिट y होता इसकी वैल्यू में, इंटीग्रेशन की वैल्यू में, तो वो लिमिट किसकी होती, x की. अब ये जो कॉन्स्ट, क्योंकि y की लिमिट यूज हो चुकी है तो ये दूसरी लिमिट किसकी होगी, दिस लिमिट इज ऑफ x. जैसे कि इसके ऑर्डर से भी पता चल रहा है dy dx. सो फर्स्ट लिमिट जो होगी वो y dy and this is used for x. Okay, so if we calculate this double order integration, so it's quite complicated. Okay, because the integration of exponential y square is quite complicated. So we have used, if we use the method change of order of integration, this integration will be easy and evaluation part will easy as compared to normal part. Okay, so अगर हम इसमें इसका ऑर्डर चेंज कर दें, इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ओके, इन दिस इंटीग्रेशन वी फर्स्ट आइडेंटिफाई कि अगर आपकी यहाँ पे y की लिमिट वेरी कर रही है तो इसका ऑर्डर चेंज करने के बाद y की लिमिट जो होगी वो कांस्टेंट फॉर्म में आएगी, और अगर x की लिमिट यहाँ पे कांस्टेंट फॉर्म में है तो इसका ऑर्डर चेंज करने के बाद x की लिमिट जो होगी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल फॉर्म. Exponential y square function remains same, and but the order, this dy dx, this will be changed. Now the new order will be dx dy. Okay, so this is a concept of change of order of integration. This is used basically to solve the integration part and with the easy way. Okay, the process of changing a given double integral into an equal double integral with order of integration change is called change of order of integration. So variable limit will become a constant limit after changing its order, and the constant limit will become the variable limit. Okay, now we see if the limit of integration are constant, if both limit are constant, okay, so the order of integration in that case does not matter. In that case, its order is dx dy. Okay, so अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमें नहीं पता चल रहा कौन सी लिमिट x की है एंड कौन सी लिमिट y की है, बट यहाँ पे जो ऑर्डर दे रखा है dx dy, इसके ऑर्डर को देख के हमें समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ पे फर्स्ट dx है तो ये जो लिमिट होगी दिस विल बी ऑफ लिमिट ऑफ x, एंड
द लास्ट वन dy लिमिट, ये लिमिट आपकी आउटर लिमिट होगी। और अगर यहाँ पे dy लिखा है तो दिस लिमिट, ये किसकी लिमिट की होगी, y की, एंड द आउटर लिमिट विल बी ऑफ x। अगर हम इन दोनों वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, so both value will give the same answer. Okay, this I have calculated in this question. We first solve the integration. We first yes, calculate with respect to x, and then we calculate this integration with respect to y. Okay, and by doing this procedure, we get the answer 1 here. But in the second part, first integration, we have to solve the first integrate with respect to y, and then integrate it with respect to x. So after solving this, we again get the same answer. So we can conclude here, the order of integration does not matter in case of constant limits. Okay, अगर दोनों ही constant limit है तो हम किसी को भी पहले solve कर सकते हैं, इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता उस केस में। बट इफ द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आर वेरिएबल फॉर्म, मीन्स यहाँ पे एक लिमिट वेरी कर रही है और जो दूसरी लिमिट है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो जब भी कोई भी लिमिट वेरी करती है तो हम इंटीग्रेशन सबसे पहले वेरिएबल लिमिट के रिस्पेक्ट में करते हैं। अब यहाँ पे gx ये शो कर रहा है कि ये जो लिमिट है y की है, बिकॉज ये इन टर्म्स ऑफ x है, और जो दूसरी लिमिट होगी वो किसकी होगी, आउटर लिमिट, दैट इज ऑफ x। इसके ऑर्डर भी बता रहा है dy मीन्स कि फर्स्ट वी हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y एंड देन इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू x। बट अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो y की लिमिट जो यहाँ पे वेरी कर रही है, इसका ऑर्डर चेंज करने के बाद y की लिमिट जो होगी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, और जो x की लिमिट कांस्टेंट है, इसका ऑर्डर चेंज करने के बाद इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, वेरी करेगी। सो जो गिवन लिमिट है, गिवन लिमिट दैट इज x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b, और y की लिमिट क्या है, gx टू hx। बट आफ्टर चेंजिंग इट्स ऑर्डर, x की लिमिट होगी वो किस फॉर्म में हो जाएगी, वेरिएबल फॉर्म में। इसको हम क्या लिख देंगे, x इक्वल्स टू gy या g1y टू x इक्वल्स टू h1y, और y की लिमिट जो कि वेरी कर रही है वो क्या हो जाएगी, y की लिमिट कांस्टेंट हो जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में यही होगा, अगर आपकी एक लिमिट वेरी कर रही है तो इसका ऑर्डर चेंज करने के बाद वो लिमिट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, और जो लिमिट कांस्टेंट है इसका ऑर्डर चेंज करने के बाद वो लिमिट वेरी करेगी। So now we discuss some working rule of change of order of integration. First we have to identify the variable limit, कि कौन सी लिमिट वेरी करेगी और कौन सी लिमिट आपकी कांस्टेंट होगी। Okay, if I am writing is x to 1 and 0 to 1 exponential y square dy dx. Okay, we take this example. We will discuss this example in the next slide. So सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है which limit is in the variable limit and which limit are constant. So in this question, this limit is in the form of x. So this limit definitely is of y and the other limit is of x. Now next point is identify the strips for variable limits. Now we have to identify the strips. Strips means कि अगर आपकी y की लिमिट वेरी कर रही है, यहाँ पे y की लिमिट क्या है, x टू y इक्वल्स टू 1, ये लिमिट वेरी कर रही है क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी y की वैल्यू भी चेंज होगी, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इट्स वेरिएबल लिमिट। सो अगर y की लिमिट वेरी कर रही है
So we draw the vertical strips. Okay, and अगर x की लिमिट वेरी करेगी, so we draw the horizontal strips. So for this, for the given limits of integration, we first draw the figure for the given limits of integration, and then again draw the same figure and change the strips. Change the strips means अगर क्वेश्चन में y की लिमिट वेरी कर रही है, तो इस फिगर में हम वर्टिकल स्ट्रिप्स ड्रॉ करेंगे, बट आफ्टर चेंजिंग इट्स ऑर्डर वी ड्रॉ करेंगे, वी ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, and by doing this we get the new limits of integration in the reverse order, and then integrate and we get finally the answer. So again, we take the same example, 0 to 1, x to 1. So given limit of integration, first I am writing the given limit of integration. So this limit is of y equals to x to y equals to 1. And the other limit is x equals to 0 to x equals to 1. So this is the variable limit. You can say that अगर y की लिमिट वेरी कर रही है, तो इसका मतलब we have to draw the vertical strips, and this limit is a constant. Okay, x की लिमिट क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और इसका ऑर्डर जो कि dy dx है, इसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा. After changing the order of integration, the new order will be dx dy. Okay, so for this we have to draw the figure first. Okay, so in this y equals to x to y equals to 1, y equals to x is basically a straight line. This is a straight line equation, y equals to x, and y equals to 1 is a constant line, y equals to 1. This is x-axis and this is y-axis. So according to the question, we draw the figure 1. We can give it name figure 1. This is figure 1. And but after changing the order, so okay, one more thing I have to tell you. In this case, y limit is vary. Y equals to x to y equals to 1. So we draw the vertical strips here according to the question. Now we change the order. After changing the order of integration, the y limit will be constant and the x limit will vary. Okay, so x की लिमिट अगर वेरी करेगी, तो पहली वाली फिगर में हमने वर्टिकल स्ट्रिप्स ड्रॉ करी थी, अब हमें क्या करना है, हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स ड्रॉ करनी है. हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स ड्रॉ करने का मींस कि ये जो स्ट्रिप्स है y एक्सिस पे कहां से स्टार्ट हो रही है, ये इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, एंड ये स्टॉप कहां हो रही है, इट लाइंस गोस टू हियर एंड्स हियर. तो इस पॉइंट पे ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, 0, एंड स्टॉप यहाँ पे हो रही है, तो इस पे x की वैल्यू इज y. So limit of x will be x equals to 0 to x equals to y. Now this will become a variable limit. Okay, now we have to find out what is the limit of y. So the limit of y, this is 0 0, and y, this value is 0 comma 1. So y की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, it goes up to 0 0 to this is a 1. Y equals to 0 to y equals to 1. Now the new, this will be the new limit. So we get the limit y equals to
0 टू y इक्वल्स टू 1, हम हमेशा कांस्टेंट लिमिट को आउटर में रखते हैं और जो भी वेरिएबल लिमिट होती है उसे हम इनर पार्ट पे रखते हैं. x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू y exponential y square, and now the new order will be dx dy. So now we have to solve this integration part. Okay, so I am writing again here. I have to write for solving this integration exponential y square, this is dx dy, and the range of x will be 0 to x equals to y and y equals to 0 to y equals to 1. We can check also, yes, this is a range. So now it is easy to solve this integration. So this is the value of y equals to 0 to 1. तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, हमें x को इंटीग्रेट करना है. वी फर्स्ट नीड टू इंटीग्रेट x. दिस इज एक्सपोनेंशियल y स्क्वायर, दिस इज dx, x इक्वल्स टू 0 टू y, ओके, 1 dx, दिस इज dy. So when we integrate this, the integration of 1 will be x. This is 0 to x equals to y. Okay, y equals to 0 to 1 exponential y square, upper limit minus lower limit. x की जो upper limit है वो क्या है y, तो हम x की प्लेस पे क्या पुट करना है y, and then minus इसकी lower limit x की जगह पुट करेंगे तो this will be 0. So the final answer will be exponential y square y into dy. And the limit will be y equals to 0 to 1. So can we solve this? Yes, we can use a substitution method for this. Let y square equals to t. 2y dy equals to dt. Then the value of y dy will be dt upon 2. And we have to find out the limit in terms of t also. Here the limit y equals to 0. तो t की टर्म्स में y की लिमिट क्या हो जाएगी, y स्क्वायर इक्वल्स टू t. अगर हम यहाँ पे y की जगह 0 पुट करेंगे तो t की लिमिट क्या हो जाएगी, t की लिमिट 0 हो जाएगी. एंड for y equals to 1, for y equals to 1, the limit of t will be 1. So the whole integration will convert into t. So now the new limit will be t equals to 0 to t equals to 1 exponential t, and this will be y dy is equal to dt upon 2. Okay, so I think this will be easy to solve this integration. Half 1 by 2 is a constant, exponential t dt, t equals to 0 to 1. We know the integration of exponential t is exponential t and the upper limit is 0 to 1. तो क्या करना है, t के प्लेस पे एक बार 1 पुट करना है, अपर लिमिट, माइनस t के प्लेस पे एक बार 0 पुट करना है, एक्सपोनेंशियल 1 माइनस एक्सपोनेंशियल 0. So the answer will be half exponential minus 1. This will be the answer. So you can see that after changing the order of integration, we can easily solve this integration. Now we take one more example. This is the question which we have to solve by changing the order of integration, and the limit is given y to a and 0 to a. So again we have to first identify which is the limit of x and which is the limit of y. Okay. So if this limit is given in terms of y, so we know this is the limit of x and the other one is the limit of y. जब भी आप देखेंगे कि y की फॉर्म में इंटीग्रेशन की लिमिट है तो वो लिमिट हमेशा x की होगी, और x की टर्म्स में दे रखा है तो वो लिमिट किसकी होगी, y की होगी. सो फॉर दिस
So given limit is given limit as follows: x equals to y to x equals to a, and the range of y is y equals to 0 to y equals to a. So xc limit, here the limit of x is in the variable form. This is the variable limit, and the limit of y is a constant. So if the limit of x is variable limit, so we draw the horizontal strips because the limit of x vary. That's why we draw the horizontal strips. And in case if y limit vary, we draw the vertical strip, as you see in the previous question. So based on the given limit of integration, we draw the figure. In the question, the limit of x equals to y to x equals to a, and we know x equals to y is a straight line. So we draw the figure x equals to y, and x equals to a is basically a constant value. Okay, so x equals to a is this line. So we draw the horizontal strips here. Okay, we draw the horizontal strip, this one, and this strips start from x equals to y and ends at x equals to a, and the y limit will be 0 to y equals to a. But after changing the order of integration, the y limit, which is a constant in the previous figure, this will comes in the variable form, and the x limit will be constant. So we have to find out what is the value, what is the limit of y and x. So for this, we draw the same figure again. This is figure 1 and this is figure 2. This figure is after changing the order of integration. After changing the order of integration. So we draw the same figure, but in the second figure, we draw the vertical strips. Okay, we draw the vertical strips. So we have to see that this strip starts from here and ends here. ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये एक्स एक्सिस की लाइन है. इस एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या है 0. तो y इक्वल्स टू 0 एंड इट एंड्स हियर. सो y की वैल्यू यहाँ पे क्या है y इक्वल्स टू x. ओके, सो दिस इज अ वेरिएबल लिमिट. Variable limit, and the value of x is 0 to a, and the order of integration will be changed. In the given question, the order is dx dy. Now the order of integration will be dy dx, and this order of course change. This order is dy dx. Okay, so first we write the variable limit y equals to 0 to y equals to x and x equals to 0 to x equals to a. Okay, and its order is dy dx, and the function is x upon x square plus y square. So x upon x square plus y square. So we first need to integrate it with respect to y, because y is a variable limit. हम जब भी करेंगे हमेशा वेरिएबल लिमिट के रिस्पेक्ट में पहले करते हैं x 1 upon x square plus y square integration dy, and the limit of y is 0 to x. This is dx. Okay, and this is value is x equals to 0 to a x. The integration of is tan inverse y upon x into 1 upon x, and the limit of y is 0 to x dx. This x is a constant basically here,
So this will be cancelled out. So the range of x is 0 to a, tan inverse y upon x, and the limit of y is x to 0. You can check also. Yes, y equals to 0 to, sorry, y equals to 0 to x. Okay, have to correct it. Y equals to 0 to x into dx. So x equals to 0 to a. We first write the upper limit. Upper limit is x. So we put y equals to x here, x upon x minus tan inverse 0 upon x. This is dx. And this value is tan inverse 1 minus tan inverse 0. So we first simplify this. Tan inverse 1 value is pi by 4 and tan inverse 0 is 0. Pi by 4 into dx and x equals to 0 to a. Pi by 4 is a constant and x equals to 0 to a, 1 into dx. This is pi by 4 and the integration of 1 is x. This is 0 to a and this value comes out to be pi by 4 into a minus 0. So answer is pi by 4 a. So this will become the answer of this question, pi by 4 a. This is the answer. So by using this way, we can solve some complicated order of integration problems. This is the reference which you can use. Thank you.